लाइट्स कैमरा इफी। एक बार फिर हम हाजिर हैं हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट सीधे पणजी गोवा से भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण के साथ इफी 2024 की हर हलचल हर खबर लेके। देर कैसी, आइए आपको दिखाते हैं कि इफी 2024 के मंच पर कौन से वो सितारे हैं जो धूम मचा रहे हैं, कौन सी वो फिल्में हैं जो सीधे दिल को छू रही हैं। अक्किनेनी नागेश्वर राव, ये वो शख्सियत है जिसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को सशक्त बनाया। अक्किनेनी नागेश्वर राव ये वो हस्ती है जिसकी विरासत आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। अक्किनेनी नागेश्वर राव की विरासत को, उनकी फिल्मों को, उनकी लेगेसी को सम्मानित किया जा रहा है इफी 2024 में। इसी कड़ी में उनके बेटे सुपरस्टार नागार्जुन पहुंचे इफी 2024 के मंच पर। यहाँ पर ना सिर्फ उन्होंने अपने पिता को याद किया बल्कि उनकी विरासत को भी एक बार फिर दर्शकों के सामने रखा। इसी कड़ी में हमने की खास बातचीत लेजेंडरी एक्ट्रेस अमला अक्किनेनी से भी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू और प्रख्यात फिल्म अभिनेता और निर्माता अक्किनेनी नागार्जुन राव ने गोवा के पणजी में कला अकादमी में सफरनामा भारतीय सिनेमा का विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये मल्टीमीडिया प्रदर्शनी केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत की समृद्ध सिनेमाई परंपरा और इतिहास के बारे में लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से लगाई गई है। When I was very young, when we were all very young, all my siblings and myself, it really never dawned upon us because he was so ordinary, normal father at home, and he would come, treat us with compassion, and I don't ever remember him shouting at me, all these, or raising his hand against me. I think my mother took all that credit. So, but there was always love, there was always smiles when he was around. He made sure of that. And somewhere he imbibed in us, even at a young age, my job is to make him feel proud. इस कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने केटीबी भारत है हम एनिमेशन सीरीज सीजन 2 का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित ये एनिमेटेड सीरीज 1 दिसंबर से दूरदर्शन, वेव्स और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीन होगी। तो भारत है हम, दिस इज द सीजन 2 स्टार्टिंग, एज वाज मेंशन्ड, वी ऑल लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड वी विल लर्न द बेस्ट व्हेन वी लर्न the history from the perspective of those who fought for our freedom. And I think this is what this series is not just going to be exploring, but will allow us to be educated. Very important, not just for the next generation, but even for our generation also, because we always take our freedom for granted. And I think this is a great tribute to all the freedom fighters. इफी 2024 में शताब्दी विशेष ANR अक्किनेनी नागेश्वर राव के जीवन और कार्यों का उत्सव नामक एक विशेष सत्र के माध्यम से भारतीय सिनेमा के अग्रणी अक्किनेनी नागेश्वर राव को श्रद्धांजलि दी गई। पणजी में कला अकादमी में आयोजित इस सत्र में उनके बेटे नागार्जुन अक्किनेनी ने मशहूर अभिनेत्री खुशबू सुंदर के साथ खास बातचीत सत्र में हिस्सा लिया। इस अवसर पर नागार्जुन ने अपने पिता की दिल से जुड़ी हुई यादों को साझा किया और उद्योग के लिए उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। ఇలా చేస్తే నాన్నగారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు, బట్ హి డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఫ్రమ్ us, and that's I think is a very unique quality of any human being. We were never in fear of him, we were always in awe of him, respect, love, so that he taught us in a very simple way. भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में ANR के कालातीत योगदान का उत्सव मनाया जा रहा है, जिससे दर्शकों को उनके सिनेमाई व्यक्तित्व की अनछुए पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा।
इफ़ी 2024 के मंच पर 4 दिग्गज कलाकारों के सेंटनरी सेलिब्रेशंस किए जा रहे हैं। हमारे साथ है अमला अकीनेनी। बात करें लेजेंडरी एएनआर की, किस तरह से उनकी लेगेसी को आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त प्रदर्शनी में घूम के आई हूँ, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उनकी लेगेसी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। किस तरह से याद करते हैं आप? जी, बहुत it's a great honor and it's so wonderful for us as his family, उनके परिवार के तरफ. It's a very emotional time because it's like we are feeling his presence all around, and that इतना सम्मान किया है Ministry of Information and Broadcasting and NFDC. It's just wonderful as a region for Telugu cinema to get recognized like this, and for the contributions he made to Telugu cinema to get recognized like this on an international platform. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. युवाओं के साथ आप यहाँ पर आई हैं, बड़ी बिग बजट पैन इंडिया फिल्म्स की बात होती है, लेकिन एक छोटी सी फिल्म आप लेकर आई हैं. किस तरह का यहाँ पर रिस्पांस है, और युवाओं के बीच आप जा रही हैं, उनका काम देख रही हैं, कैसा आपको लगता है कि फिल्म फेस्टिवल सर्किट के हिसाब से कितना? जी, अकिनेनी नागेश्वर राव जी ने ये कॉलेज स्टार्ट किया था बिकॉज ही यूज्ड टू ऑलवेज लुक फॉर न्यू टैलेंट. इनफैक्ट आपने सुना होगा के विश्वनाथ, एक बहुत मशहूर डायरेक्टर, ही वॉज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट, एंड अकिनेनी नागेश्वर राव जी ने उनको इनकरेज किया था कि आप भी डायरेक्टर बन सकते हो. एंड ही encouraged him, and he did his first film as his actor when he was directing. So he always looked for new talent, and अपने स्टूडियो के गेट के बाहर there used to be dozens of young people बस वेट करते थे, ठहरते थे मौका के लिए, just that they will get a chance to come pitch their story. And so he said ये अच्छी नहीं है, this is not the right way, चलो कॉलेज शुरू करो, let them come in, let them learn the right way. Why should they wait outside there for a chance? Learn the right way and go with dignity, knowing your craft, how to pitch. But for them, of course, film festivals were always an opportunity to get selected. Your student film may get selected. Audiences will appreciate. एक दो award भी मिल पाएंगे. But beyond that, for OTT, it gives them a beautiful opportunity to be seen by more and more audiences. Students always come up with something original, something new, something different, and uske liye you need to be very adventurous. And in short stories, you can tell different stories. टीवी के सुनहरे दौर को, उस नॉस्टैल्जिया को आप एक बार फिर देख सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर, जिसने आपके सारे पसंदीदा शोज को डिजिटलाइज कर दिया है. आज के मॉडर्न ट्रेंड से ताल मिलाते हुए परिवार और युवाओं को केटर करता हुआ शानदार कंटेंट इस वक्त उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर. लोक प्रसारक का नया अंदाज, दूरदर्शन का नया अंदाज और वेव्स का शानदार कंटेंट इस वक्त दर्शकों को काफ़ी लुभा रहा है. इफ़ी 2024 के मंच पर एकत्रित हुए शीर्ष निर्माता, निर्देशक, और उन्होंने बात की ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स की. दूरदर्शन के नए अंदाज को बेहद पसंद किया जा रहा है. इसी कड़ी में दूरदर्शन और वेव्स पर आने वाले कंटेंट निर्माता, निर्देशक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इफ़ी 2024 के मंच पर एक साथ आए. किकिंग बॉल्स के साथ ऑस्कर विजेता गुनीत मोंगा बाल विवाह की कुरीति पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं. There's a lot of nostalgia with Doordarshan. It went to every home, and I was the most excited and fascinated when Doordarshan, जिसकी सबसे ज़्यादा reach है, was coming up with OTT and was opening different formats of content, you know, which to me was very very fascinating. बस वो एक कहानी है जज्बे की, वो एक कहानी है एक बच्चों की जो अपनी ज़ुबान ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में. जो उनके लिए लिखा गया था वो उसके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. उस पिक्चर का नाम है किकिंग बॉल्स. सबको कहूँगी कि देखें, सपोर्ट करें, ट्वीट करें, सोशल मीडिया पे डालें, वेव्स पे देखें. एंड दिस सपोर्ट मेरे लिए उससे बड़ी बात नहीं है कि ये गांव-गांव, घर-घर पिक्चर जाएगी. तो आज there could not have been a better platform for a documentary like Kicking Balls, for our voice, for the voice of those girls
to go forward. So I'm very, very grateful for this opportunity, sir. इस मौके पर उपस्थित प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि देश के कोने कोने से भारत की अनसुनी कहानियां अब नजर आएंगी OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। By trying to provide something for every section of the audience, whether they are young boys and girls, whether they are older people who want to maybe relive some of the legacy of the past, people who are looking at new forms and new styles of storytelling and content making. Even the areas, even in terms of geographies, even in terms of languages, as the public service broadcaster, Prasar Bharati has always been committed to reaching the audiences in their language, telling their stories. And the digital medium allows us to now take these stories beyond the local areas globally, so that even people who speak a particular language or who hail from a particular area, who have now for any reason moved out of their home territory, can still access this content and feel connected continuously to their roots. अभिनेत्री और निर्माता नीतू चंद्रा वेव्स के माध्यम से बिहार की अनसुनी कहानियां दर्शकों तक ला रही हैं। दूरदर्शन is a feeling and we have been feeling it since childhood. जैसे गुनीत ने कहा बिल्कुल, और इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि दूरदर्शन में ही हम बड़े हुए हैं। हमारा देश गांव का देश है, दूरदर्शन उससे कनेक्टेड है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि वेव्स जो दूरदर्शन का प्रसार भारती का OTT है उस सबसे जुड़ेगा। फौजी 2.0 के निर्माता संदीप सिंह और विनीत जैन, साथ ही फिल्म जाइए आप कहां जाएंगे के अभिनेता करण ने इस मौके पर कहा कि वेव्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है उनकी कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लोक प्रसारक का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और दूरदर्शन का नया अवतार ला रहा है एंटरटेनमेंट की नई लहर हर उम्र के और हर वर्ग के लोगों के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं दुनिया के शीर्ष निर्माता, निर्देशक और कलाकारों की नई वेब सीरीज और फिल्में, तो तुरंत डाउनलोड कीजिए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, पणजी, गोवा। क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है सरकार की ओर से और आयोजन होने जा रहा है फरवरी 2025 में वेव समिट का, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसकी तैयारी पूरी है। सिर्फ जरूरत है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी भागीदारी की। सो इट्स अ बिग शूट आउट टू द यूथ ऑफ आवर कंट्री। बात करते हैं हमारे अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स की, जो इस समय दर्शकों का ध्यान खींच रहा है बड़ी संख्या में, और इस वेव पर आप देख सकते हैं शानदार कंटेंट। Hello everybody, we are here today during the International Film Festival of India at Goa, the 55th edition, and as you are aware, we have at Prasar Bharati recently launched our OTT platform Waves, and on Waves there is a specific section that has been created for young creators, and we have attempted to bring together a lot of the fresh talent who's just making its presence felt in the industry, to showcase their efforts, to showcase their output on Waves, on Prasar Bharati. As you are also aware that the theme of this year's International Film Festival also revolves around the young and upcoming creators, and it is an ongoing endeavor on part of Prasar Bharati and the Ministry of Information and Broadcasting to foster new talent to come up. This year's International Film Festival also pays homage to the great of Telugu cinema, the Nat Samrat A&R, and today we are privileged to have here with us Amla ji and two of our students also, Saroj and Atharva. Amla ji, of course, needs no introduction. In her long and illustrious career, she has played some wonderful roles, and now she is playing possibly an even more important role in terms of encouraging and guiding new talent through the Annapurna School.
And our two young friends here, Saroj and Atharva, are both products of the school. And they have also worked together on creating this film called Roll Number 52, which is one of the opening lineups of Waves. The film is already available on Waves. And today, later in the day, we will also be doing a special screening of the film here at Inox in Goa. Saroj has worked on the writing and the direction part of it, and Atharva did the cinematography for Roll Number 52. So with this brief introduction, I will now take you to Amla ji, and let's listen to her as to what she thinks about what all we can be doing together to encourage and foster young talent. Wonderful. Thank you. Thank you so much, sir, for the wonderful introduction. So, Annapurna College of Film and Media is 15 years old, and as you said, pardon me, as you rightly said, it was started by Akineni Nageshwar Rao, who is being honored for the centenary, for his centenary, along with the other stalwarts. The college has both a master's and bachelor's degree in filmmaking, but it also has a host of short courses, and acting is one of them. Atharva and Saroj did their masters with us. In fact, they're both from Maharashtra. We get students from across the country, right from Sikkim to Kerala and the breadth of India. We get students, and my father-in-law was very particular that they all tell their stories in the native tongue. So even though the degree is in English language, and academically they have to write something in English, all their stories are written and told in a language of their choice. And this is to keep the regional flavor and the regional culture alive in the film. It's very interesting that both Atharva and Saroj chose to tell a Telugu story. And the remarkable thing is they told it so well that being Marathi and being from Maharashtra, they were yet able to, in their time with us in Telangana, they were able to imbibe a lot of the Telugu culture, and they chose. In fact, I kept telling him, "Arey, this is a nice story for Mumbai. Why are you telling it in Telugu?" He says, "No, ma'am, I want to tell a Telugu story." So it's like a microcosm of India, where filmmakers come to, these are aspiring filmmakers, they come together as students, and they kind of influence each other with their cultural understandings, and they experiment telling new types of story in a very short format. I mean, that's what every young filmmaker is aspiring for, because for them to think of making a feature and going to the big screen is a dream, and it may take 5-10 years. Several of our alumnus, now having been around for 15 years, last 10 years we have a number of alumnus now working in the field. Several of them have made feature films, but it took them 5 to 10 years to get that opportunity. So for young people to showcase their talent and to showcase the work that they are capable of creating, a platform like Waves is God-sent. My request to you is to tell us what the plans for Prasar Bharati are, and showcasing their films is really God-sent. Welcome to our world of film and media, sir. Welcome to Prasar Bharati, to film and media. It's a very exciting, glamorous world, but it's also very hard work. And it's because these young people are willing to burn the midnight oil and make content in a very sustainable budget that they're able to come this far. But now they've come this far, we'd love to know what's in store. मेरे फादर इन लॉ ने शुरू किया था अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया. उनके देहांत के बाद the family asked me to take care of it, being a pan-India actor, because people like to know who is speaking, right, about the film school. So because of my background in films and multiple languages, they brought me in to look after the film school.
the beauty about cinema is it brings India together, right? And our family is also like that. We are multicultural, multi-language, so we've come together. And the students, they help each other grow. Because say you have a boy from Sikkim having to make a film with a girl from Kerala, and they have to collaborate together, they have to tell the story. There will be flavors of Kerala, but there will also be flavors of Sikkim, you know. And the wonderful thing is at the end of it, they come out as very mature, open minds, not petty and only thinking of regional. They come out with their minds open to new cultures, new ways of collaboration. And I think when, perhaps even, you know, when you're collaborating within a small region, there is a lot of competition. But when you're collaborating from different parts of the country, you get more confidence. You know, it's the growth mindset and the fixed mindset. When your mind is closed and you're very petty and you think there's only itna hi cake hai, khane ke liye itna chota cake hai, then you think very petty and you become this very fixed mindset. And then when you know, oh my goodness, everybody loves stories. I'm looking at audiences who love a good story. I'm looking at audiences who want to see something different, who want to see something that matters to them, right? And you get the confidence because you're mixing with so many different cultures in your college days. You never forget that, and that influences you to explore new ideas. सिनेमा में यही एक है, कुछ नया दिखाओ, कुछ नया समझाओ. ये तो हर एक सोचता है, चिंता करता है इसके बारे में. There is a very limited time that the student is with us. उसके अंदर पूरा जिंदगी भर का ज्ञान नहीं दे सकते हैं ना. They have to experience it and they have to explore and develop their own wisdom. And business तो बदलती रहती है, आपने देखा है. So they have a chance to learn the craft. Craft तो सीख जाती है and they make the films, they learn how to make. So that confidence they have. But when it comes to production, how to use a sustainable budget, how to source, like the college invests 3 lakh per film, but it doesn't go far. So they have to do above that. Then we do the DI in our place. We give them the cameras, we give them the lights, we give them the equipment, all of that, but it still needs money. So they have to learn how to do it in very less money, how to leverage it, and also how then you garner audiences. The one big thing is that you have to search your audience. You have to look for your audience. You have to find your audience. And that is an art and a skill. मतलब आप BCom सिखाएंगे या CEO बनना सिखाएंगे. BCom सिखाएंगे पहले ना, उसके बाद वे 10-15 साल अपने आप मेहनत करके समझ के they will chase after the business, and only when they get that big thing then they are entitled to become a CEO. Or you invest all your money and you become CEO, right? So it is part of the process, and I think it's a very important part of the process. अगर पूरा एक platter पे पहले ही दे दिया उनको पूरा ज्ञान मिल गया सामने में, मेहनत ही नहीं करेंगे. Cinema, to make a film, it takes a lot of hard work, and they have to do the hard work, है ना? हाँ, you have to do the hard work. Even till today, I know Nagarjuna as an actor, if he is making, as a producer, if he is making, इतना मेहनत, and दिन रात जब तक रिलीज ना हो, and उसके बाद भी अभी प्रमोशन के लिए भी मेहनत. I know how hard it is. You have to
to be willing to put in that hard work, understand, एक सक्सेस हुआ तो दो सक्सेस नहीं होगी, हर चीज़ सक्सेस नहीं होती है. And you learn how to take that failure, you take the failure, you learn what mistakes were made, you fix it and you go do it again. अगर क्रिकेट खेले तो डकआउट हुआ तो प्रैक्टिस करके वापस जाना है ना पिच पे, नहीं तो यू आर नॉट अ क्रिकेटर. दैट इज व्हाट वी टीच देम. चलो So we were in conversation with Amalaji, Saroj and Atharv, and the audiences can watch their creative effort, role number 52 on Waves. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, young men, and wish you all the best for your career. Thank you so much. Thank you, everybody. Have a nice day. Namaskar. भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के हर रंग से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे हमारे खास कार्यक्रम लाइट्स, कैमरा और इफ़ी के जरिए सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज़ पर. तो देखते रहिए हमारे साथ इफ़ी 2024 की हर हलचल, हर खबर. फिलहाल आज के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.